Hello student, today we are study about the most important chapter differentiation class 12 स्टेट बोर्ड का सबसे important chapter है पार्ट सेकंड में आता है और ये जो differentiation है तो इसमें हमें बहुत सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सो वी solve some formulas. We have to learning about the what are the formulas of derivatives. Once we complete the formulas of derivatives, then we go for the solution of so many examinations. So these are the types we have to cover throughout that lecture series. So first one is that is the composite function, next exponential function, then we go for the logarithmic function, after that the inverse, implicit and parametric function. So these are the functions. So we have to study and solve so many examples based on that all functions. And first of all we study about the all the formulas. We covered the all formula. तो आपको अच्छे से लास्ट एंड तक इसको देखना है ताकि इसका जो भी फार्मूलाज है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. जितने भी फंक्शंस हैं ऑल फंक्शंस हम वन बाय वन बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे. जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन में पूछे गए होंगे दैट इज द सीरी एग्जामिनेशन में और अपने स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका जो पढ़ाई होगा वो अच्छे से हो जाएगा. सो लेट्स वी स्टार्ट. सो नाउ द डेरिवेटिव ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शन. तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल फार्मूलाज रहेंगे, उसको अच्छे से याद रखना है. सो डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस वी टेक नाउ वी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. तो मैंने इसको तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लिया है. तो हम फर्स्ट कैटेगरी बहुत सिंपल वाले फार्मूले रिमेंबर करेंगे. सो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n. तो इसको याद कैसे रखना है, x रेस टू n दैट इज फंक्शन रेस टू कांस्टेंट. सो हाउ वी स्पीक function raised to constant. What is the derivative of function raised to constant? That is n into x raised to n minus 1. So this is the first formula. Next one, next formula, d by dx a raised to x. So very simple to remember, a raised to x into log of a. Next formula, d by dx of e raised to x. So that is e raised to x into log of e. As we know that the value of log of e that is 1, so product आएगा उसका e raised to x. Next formula d by dx of log x. So derivative का log x you have to remember that is 1 upon x. Next d by dx of root x, most important formula again. So that is 1 by 2 root x. So the formula can be solved by using the function raised to constant. So now x is the function and 1 by 2 is the constant. So when we solve according to that, we get the answer. Next one formula d by dx of constant. Whenever there is any constant number means the function is not present. उसमें function नहीं रहेगा. So उसका derivative आपको 0 लेना है. So these are the first types जो मैंने अलग से लिखा है. तो इसको अच्छे से बहुत करना है. अगर आप इसको if you remember the all formulas, so you can easily solve the so many questions. Next है trigonometric functions. So we know that कि जो भी trigonometric functions है there are the 6 trigonometric functions: sin, cos, tan, cot, sec, cosec. So we have to remember the derivative of that function. So remember the first derivative d by dx of sin of x, the derivative of sin of x. So whenever we consider the function, so now here select that function sin of x. Next the d by dx of cos of x. Next d by dx of tan x. Next the d by dx of sec of x. Next d by dx of cot x. And the last one d by dx of cosec x. सो बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं, वन बाय वन हम इसको अभी रिमेंबर करेंगे तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है. डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉस एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वेरी सिंपल फार्मूला टू रिमेंबर. tan x डेरिवेटिव इज sec square x. So sec of x derivative that is sec x into tan x. Next cot x derivative is minus cosec square x. And the last the derivative of cosec x that is minus cot x into cosec x. So in such way that you have to remember the formulas of trigonometric function. So let's we revise. So first derivative, the derivative of x raised to n, derivative n into x raised to n minus 1, a raised to x that is a raised to x into log a, e raised to x that is e raised to x, log x derivative 1 upon x, under root x derivative 1 upon 2 root x, the derivative of constant that is 0, the derivative of sin of x that is cos x, derivative of cos minus sin, derivative of tan sec square x, derivative of sec x tan x,
cot का derivative minus cosec square x, and the last the derivative of cosec x, that is minus cot x and cosec into x. So last formulas, so last जो type है that is, so we have to remember the derivative of inverse functions. So similarly there are the 6 inverse function. So we first write down the formulas. Next we have to solve the derivative of tan inverse x, then derivative of cot inverse x, and then derivative of sec inverse x, and the last derivative of cosec inverse x equal to. So बहुत ही easy formulas हैं. So you can remember the first formula is the derivative of sin inverse x का derivative बहुत simple है, 1 upon under root of 1 minus x square. So the remember the derivative of cos inverse, उसको बस negative लेना है, so that is minus 1 upon under root of 1 minus x square. Next the derivative of tan inverse x बहुत easy to remember है, 1 plus x square, इसको बस minus sign लिया तो cot inverse का derivative मिल जाएगा, so that is minus 1 upon 1 plus x square. Next the derivative of sec inverse x, that is 1 upon x into under root of x square minus 1, and the derivative of cosec inverse x बहुत ही easy है, that is minus 1 upon x into under root of x square minus 1. So in such way that we remember the all derivatives formula. So जल्दी से इसको recap करना है और आपको simultaneously note down भी करना है. So note down the all formulas, so then you can remember very well. So remember again we can recap the what is the derivative of, तो आपको अच्छे से recap करना है, the derivative of x raised to n into x raised to n minus 1 log a raised to x का derivative a raised to x log of a raised to x का a raised to x log x का derivative 1 upon x, constant का 0 रहेगा, under root x का derivative 1 upon 2 root x. So ये सब derivatives आपको अच्छे से याद रखना है, a raised to x का a raised to x. Next one जो भी trigonometric function है उनके derivative बहुत easy है, sin का derivative cos, cos का minus sin, पेयर में इसको याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. सो यू हैव टू रिमेंबर इन पेयर्स. नेक्स्ट आपको याद रखना है टैन और सेक का, तो टैन का आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक ऑफ एक्स और डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स. कॉट और कोसेक का साइमल्टेनियसली याद रखना है. कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स. सो लास्ट वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सिंपल है, साइन और साइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स सिमिलर है, ओनली माइनस साइन का डिफरेंस है, देख लीजिए, दिस इज ओनली डिफरेंस ऑफ माइनस साइन. टैन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का सिमिलर फार्मूला, ओनली माइनस साइन इज देयर. एंड द लास्ट वन सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, सेम फार्मूला है, और रिमेंबर ओनली minus sign is there. So in such way that you can remember the all some derivatives of some standard function. Once you remember, then it is very easy to solve the all functions. Already we seen how many functions we have to study. So ये जब भी हम solve करेंगे, exponential, composite function है, logarithmic रहेगा, इनवर्स, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक, इसके जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे. लेकिन बस इसके लिए आपको याद आना चाहिए ऑल फार्मूला. सो मेक श्योर दैट लिस्ट बनाना है, जल्दी कॉपी करना है इसको, मतलब लिखना है जल्दी नोटबुक पे, सो यू कैन रिमेंबर द ऑल फार्मूलाज. ठीक है, याद रिमेंबर करना है उसको. So once you remember, then we go for the next. So we start the solving the questions or based on the derivatives. So these are आज जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सेशन में जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो बहुत ही सिंपल लेवल के रहेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लेवल पे रहेंगे, तो ताकि हम बेसिक अगर अच्छे से कर लेंगे, सो नेक्स्ट जब भी द बिगर और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. सो आज का जो भी लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, बहुत ही अच्छे से इसको देखना है. जिनको डेरिवेटिव में दिक्कत है वो अच्छे से इसको देख सकते हैं. सो लेट्स बी स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. The function y is the function of x is given है, y is the function of x. फर्स्ट है रूट एक्स, सेकेंड साइन एक्स माइनस सी रेज टू एक्स. तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, तो सिंपल क्वेश्चन है और हमें कैलकुलेट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो मतलब इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो बहुत सिंपल है. सो डिफरेंशिएटिंग, तो हमें डिफरेंशिएटिंग करना है. सो डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. सो y को हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डी बाई डी एक्स. सो डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इक्वल टू डी बाई डी एक्स
अंडर रूट एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स। तो ये है फर्स्ट रूल, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, पहले तो डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हर एक फंक्शन को डी बाई डी एक्स सेपरेटली लगाना है, उसके बाद जो भी उसका फार्मूला रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट उसका आंसर हमें लिख लेना है। तो ये जो लेक्चर है बहुत ईजी होने वाला है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ sin x and last one d by dx of e raised to x। तो आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव आता है cos, e raised to x का आता है e raised to x dy by dx। so in such way that first and most simple question हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। बहुत सिंपल है, 3 स्टेप में करना है। कैसे करना है, पहले इसको डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, हर एक फंक्शन को डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है, और लास्ट वन जो भी डेरिवेटिव्स के फार्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूलाज हमें उसका आंसर लिख लेना है। ओके, सो वी गो फॉर नेक्स्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is given, y is the function of x is given, और हमें वापस डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get। सो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, 3x रेज टू 4 प्लस सेक ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x। सो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या याद रखना है आपको, हर एक को डी बाई डी एक्स लगाना है। 3 तो कॉन्स्टेंट है, सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज x रेज टू 4 डी बाई डी एक्स ऑफ sec of x, then next function is cos x, and the last that is log of x। तो आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, तो फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। x रेज टू n का जो डेरिवेटिव आता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4 इंटू x रेज टू 4 माइनस 1, दैट इज 4 इंटू एक्स क्यूब। सो नाउ दिस इज द solution of x raised to 4, तो उसको हम लिख लेंगे। so what is the answer, that is 4 into x cube। next one sec का तो अच्छे से पता है आपको, बस सीक्वेंस में बोला था मैंने, sin का cos, cos का माइनस sin, tan का sec square x, sec का sec x tan x। so what is the derivative of sec of x, that is sec of x into tan of x। what is the derivative of cos, cos का आएगा माइनस sin, नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस बिकम प्लस, वो लॉग तो बहुत सिंपल है, दैट इज 1 upon x। so we get 4 3s are 12 x cube plus sec of x into tan x, next minus minus plus sin x, and the last one 1 upon x। so this is the solution of given function। तो हमने अच्छे से उसका डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। so make note, remember the all formulas। the next example is, so next function is given, we have to again calculate the derivative of given function, so that is dy by dx। so differentiating y with respect to x, so we get, उसको differentiate करना है, so that is dy by dx। so again d by dx, then x raised to 10 plus 10 raised to x e raised to x। so this is the first step हमने complete कर लिया। so make sure the next step applying the d by dx to every function, और उसके बाद आपको बस सिंपल आपको जो भी फार्मूला रिमेंबर है अकॉर्डिंग टू दैट उसका आंसर लिखना है। तो बहुत सिंपल है। so this is the x रेस टू 10, मतलब फंक्शन रेस टू कॉन्स्टेंट, x रेस टू n के हिसाब से इसका आंसर आएगा 10 इंटू एक्स रेस टू 10 माइनस 1, तो कितना बनेगा नंबर 9। 10 रेस टू x मतलब कांस्टेंट रेस टू फंक्शन ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 10, और लास्ट वन ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स आता है। सो इन सच वे दैट वी कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, एंड देन सो आपको अच्छे से इसको नोट डाउन करना है, मेक फास्ट नोट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, so if again the y is given, that is the function of x, this is the function of x, and then we have to calculate the dy by dx, so that is differentiating। so we have to solve the example। so differentiating
y with respect to x we get, so that is dy by dx. Apply dy by dx on both sides. So this is the first step. बहुत ही simple है first step. And the next step, dy by dx को separately apply करना. So now here, so 3 is the constant, then the derivative of x raised to 4 plus d by dx of, remember the derivative of cos x. आपको बस अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना है. Why we take the so many questions? क्योंकि आपका जो भी प्रैक्टिस रहेगा, मतलब जो भी फार्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट ऑल फार्मूलेस कवर कर लिए. सो नेक्स्ट 3, derivative of x raised to 4, 4 into x raised to 4 minus 1, 3, x raised to n के हिसाब से इसका आंसर आएगा, क्योंकि फंक्शन रेस्ट टू कांस्टेंट है. नेक्स्ट cos का जो डेरिवेटिव है माइनस साइन x, और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और देन sec का डेरिवेटिव sec x into tan x. So next, so that is dy by dx. इसको फाइनल लिखना है. 3 4 are 12 x cube minus sin x. Again from both, so sec of x we can take common. So whenever we taking the common sec of x, what is remaining? Tan x positive and minus sec x. So ये negative sign हमने last में लिख लिया. So in such way that we complete the example. So next example, जल्दी से इसको practice करना है अच्छे से. So again we have to calculate dy by dx, or function is given, y is the function of x. So taking again differentiating y with respect to x we get, so taking dy by dx on both sides, dy by dx equal to dy by dx of e raised to x minus 1 upon x plus log of x to the base e. Again apply the dy by dx separately, that is 1 upon x and plus d by dx of we know that the base e, मतलब उसका जो डेरिवेटिव रहेगा, मतलब बेस e मतलब log e का आंसर बन जाता है. So what is the derivative of e raised to x? That is e raised to x. What is the derivative of 1 upon x? बहुत easy. 1 upon x का डेरिवेटिव जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखना है? x raised to minus 1, और इसको जो फंक्शन है उसको सॉल्व करना है x रेस टू n के हिसाब से. तो क्या आएगा इसका आंसर? माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस वन, तो माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस 2, उसका पावर नेगेटिव, उसको डिनोमिनेटर लिखना है. सो इट बिकम्स दैट इज पॉजिटिव. सो ये उसका हो गया डेरिवेटिव. सो उसका आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन x square, and the last one derivative of log x, that is 1 upon x. remember that e base e मतलब वहाँ पे log of e है, log e का आंसर बन रहेगा. So simply when हमने calculate last में minus minus become plus, so e raised to x plus 1 upon x square plus 1 upon x divided by dx. So now this is the solution of the given example. So in such way that we solve some examples. Let's be more practice so you can remember well. And now again we have to calculate the derivative of given function. So we differentiating that example, that is y with respect to x we get. So apply dy by dx on both sides. So when we apply the dy by dx on both sides, this is the first step. Next step you have to remember different separately आपको dy by dx ऐड करना है. सो मतलब अप्लाई करना है dy by dx x स्क्वायर फंक्शन रेस्ट टू कांस्टेंट. आपको बहुत ही जल्दी समझ में आना चाहिए, कांस्टेंट रेस्ट टू फंक्शन एंड देन dy by dx. रिमेंबर दैट हियर log 10 का आंसर 1 नहीं रहता है, तो आपको इसको कैसे लिखना है? log x. तो एक सिंपल फार्मूला लॉगरिथम में क्या है? देयर इज अ सिंपल फार्मूला ऑफ लॉगरिथम, log of a to the base b. इसको कैसे लिखना है? दैट इज log of a डिवाइडेड बाय log of b. इसके हिसाब से log of x to the base 10 कैसे लिखना है? log of x डिवाइडेड बाय log of 10. log 10 इज द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका आंसर 0 भी नहीं रहेगा. तो सिंपली हम उसको लिख लेंगे log of x डिवाइडेड बाय log of 10. सो ओनली log x का डेरिवेटिव आएगा. सो लेट्स वी सॉल्व. x रेस टू n का हिसाब से इसको सॉल्व करना है. 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, then 2 raised to x, that is 2 raised to x into log of 2, and the last one the derivative of log x, that is 1 upon x, or a constant, that is log of, that is 10. So this is the final answer. So we solve dy by dx, differentiate that solution question.
So both easy question tha. Let's we solve some examples, more examples for make your practice good. Next one, again the function of y is given the function of x, and then we have to calculate dy by dx. So very simple, again applying differentiating y with respect to x. So we get, so that is dy by dx, apply d by dx. So that is x raised to a plus a raised to x, e raised to x plus a raised to a. बहुत ही simple question है. So apply d by dx to each function. So then we get the answer by applying by using the formulas of derivative. So that is d by dx of a raised to a. So अच्छे से इसको observation करना है. So function raised to constant. So the answer is the x raised to n के हिसाब से इसको solve करना है. a into x raised to a minus 1. So now here constant raised to function, तो directly formula है a raised to x into log of a. Next e raised to x का e raised to x plus, बहुत interesting है, a raised to a, both are the constant. अगर complete constant रहेगा, function absent रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0. So simply we calculate. So that is a raised to x log a plus e raised to x dy by dx in such way that we calculate this example. So this is the solution of the given question. We go for the next, and the next example again very simple. So now here the observation is y is the function of x and we calculate dy by dx. So differentiating y with respect to x we get, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाई dy by dx ऑन बोथ साइड. सो अप्लाइंग द dy by dx, ये फर्स्ट स्टेप है. देन log x to the base 10 प्लस log of 10 to the base 10. सो सेपरेटली अप्लाई करना हमें dy by dx 10 raised to x plus dy by dx log x. Again now it is very simple, log x divided by log of 10, and the last one log. So last derivative of d by dx log 10 to the base 10. Both interesting observation, both are constant. मतलब उसमें फंक्शन ही नहीं है, अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. सो इसका डेरिवेटिव आएगा 10 raised to x into log of 10. log x डेरिवेटिव 1 upon x, log 10 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, इसका आंसर 0. सो दैट इज 10 raised to x log 10 plus 1 upon x into log of 10, then dy by dx. So we complete the example and in such way that we solve some examples. आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. अगर आप जितने सिंपल लेवल के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो फार्मूला है वो बहुत अच्छे से माइंड में फिक्स हो जाएगा. थोड़ा सा रिकैप करना है आपको फार्मूलाज को. एक्स रेज़ टू एन का डेरिवेटिव आपको याद करना है, मैं भी बोलूँगा, आपको ये माइंड में बोलना है. So x raised to n का डेरिवेटिव n into x raised to n minus 1, e raised to x का e raised to x, a raised to x, a raised to x into log of a, log x डेरिवेटिव 1 upon x, root x डेरिवेटिव 1 upon 2 root x. नेक्स्ट वन एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा. आफ्टर दैट साइन का कॉस का माइनस साइन, सेक का tan का कोसेक, tan का सेक स्क्वायर एक्स और सेक का सेक एक्स tan x, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक का जो भी आता है माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स. और जो इनवर्स है वो तो बहुत सिंपल है, पेयर में आपको याद रखना है. साइन इनवर्स कॉस में का दोनों का सेम रहेगा, ओनली माइनस का डिफरेंस. सिमिलरली फॉर tan इनवर्स कॉट इनवर्स, और लास्ट वन दैट इज सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स. बस आपको अच्छे से याद रखना है. 1 upon 2 upon माइनस एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट पेयर का 1 upon x into under root of x square minus 1. So in such way that we recap all formulas, we go for the, okay, so in such way that we complete the all examples. So I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट है you can text me, and most importantly अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी हमने आज किया है वो बहुत ही बेसिक था, तो अच्छे से इसको राइट डाउन करना है. फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फार्मूलाज याद रहेगा then only we can solve so many examples. So remember the formula. So this is the most important. आपको बस फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए. इफ़ यू रिमेंबर ऑल फार्मूला, सो बहुत ही अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. और क्लास 12 में जब भी आप बोर्ड का एग्जामिनेशन को जाओगे तो ये जो फार्मूला आप अच्छे से कर लोगे तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप अच्छे से उसको कर पाओगे. सो बस यही पर्सपेक्टिव था. इसकी वजह से भी
solve the example. So thank you very much for watching our YouTube channel.